तो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रीम। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट किया है हमारा लाइव स्ट्रीम। सो आई होप यू कैन हियर माय वॉइस, इट्स क्लियर नाउ। ओके, तो विथ अस वी हैव AKS ओहो Zavi. तो या गोल्ड का चार्ट है ये। तो भाई ये पूरा रिव्यूज करना पड़ेगा। ओके, या गुड इवनिंग Zavi, गुड इवनिंग टू एवरीवन. Hi. Oh, okay. So right now, if you see gold chart, it's really complicated today. Market has been a sideways. If you see Monday always, if you see Monday mostly this market been a sideways. Okay. And if you want to take a safe trade, I would say go to the 15-minute time frame. You will find out market low is here. You can wait for market to tap here. You can go for the buy. Okay. Until that, the market will be sideways. So if you want to take a safe trade, I would say mark this zone. You might, when the market tap here, okay. So if market tap here, you might go for the long up to here. Right now I can see in a 5-minute time frame also I have a high, which means if this high breaks, we gonna get a upside move. Okay, like that. We gonna get a upside move up to here, up to this height. Gold is very sideways today. Okay, gold is very sideways today, and you can see ये वाला जो भी लाइन मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा, so that you don't have any complicated. Okay, to see this. एक तो भाई 15 मिनट का OB है यहाँ पर. I will write it down. 15 OB. Where is the OB? Okay. And it will break this, and if you break this 3044, you're gonna get a 100 pips of buy side. Okay, क्योंकि all the sellers are here, so obviously market need to go up to here to hit this area. Or if you want to take a safe trade, you can take a trade from this area also. That is also a perfect area. Okay, so yeah, good evening Ishmek. Okay, we can see some live trades too. Where, bro? Live trades. What will be the ASL then for 15-minute trade? Actually, I haven't taken, but I'm just telling you, if you take a trade from 15-minute, okay, this is the 15-minute, right? I hope you can see the 15-minute time frame. If you want to take a trade from like 15-minute,
Okay, long position from like this area, this is your candle, and you have to keep your ASL below this. So if any candle close below this order block, you have to come out, and you can keep your target minimum up to this area. Okay, minimum up to this area, or maximum you can hold your trade for a 1 or 2 days. And if anyone like hold the trade up to 100 pips minimum, you can hold. Okay, so you can do that by FlexiPay. Okay, okay, no, I told I'm missing your monitoring live videos. Okay, it's okay, brother. So, right now, Arjun, you have to contact our Telegram, brother. Actually, I don't know. Actually, we have unlimited, that is true. But if you want to know, you have to contact our chat support teams. Okay, I'll just give you the link. This is our link for our Telegram, your Forex Gold. There you will find out chat supports or message me. Okay, so you can click that. You can contact our Telegram. That will be a perfect. Okay, you are waiting for 1 hour closing of change of character. Say, bro, really hard if you see. If it make it a change of character and anything, we can go for the trade. Yeah. Has anyone taken today trade? I took only 1 or 2 trade I have taken. Okay, I took regarding this area. I saw some support pullbacks. Okay, I took 1 or 2 something I took. And if you see today market is very sideways, so don't expect can I get a proper trade or what. But if this high break in a M5 minute, then we might get a big move upside like 100 pips, right? See this? So this green color candle, you can mark it that, or you can mark this candle also. But I'm gonna take this candle back one, and if it break, then obviously we will get a upside move up to this area. Okay, even though you will get a upside move now itself if you take a trade buy side, but risk is there. Okay, भाई आपका फंडेड अकाउंट है तो एग्जिनेस पर कैसे किसकी है फंडेड समथिंग लाइक दैट ब्रदर किसका है फंडेड एग्जिनेस पे तो फंडेड अकाउंट नहीं रहता है ब्रदर एग्जिनेस पे रियल अकाउंट होता है देयर इज नो फंडेड अकाउंट इन एग्जिनेस ओके हमारे पास सभी रियल अकाउंट है नो फंडेड अकाउंट or if you guys see any other currency like Ethereum, you can see this trend line. Obviously it's a bullish market. Okay, so if anyone want to enter with very low risk, I would say it will go upside only market. Ethereum, I'm just looking at 15-minute time frame. You can see the 15-minute or 5-minute. It's in a trend line area and market will go upside. But the thing is, you have to use your proper money management. If you just ask me, because 496 470, that is a huge, I would say, like long from this area. Yes, it will be like this, and you can keep a 1:2 like that. So this will be your 1:2 up to this height. You can put some break even in this area, or you can come out if it break the trend line. Okay, if your trend line breaks, then you can come out. So anyone want to enter with your proper money management. Okay, in Exodus, I mean Ethereum. I'm just telling you due to the trend line. Okay, so there is nothing else in Ethereum, and same as in a BTC. If you want to go for the long, okay guys, look at this. ये था BTC का ट्रेड. Do you guys remember ये वाला ट्रेड फिगो रिट्रेस से मैंने दिया था, अभी बताया था आप लोग को भी.
यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। उस दिन भी बताया था कि इतने भाई 74 तक चला गया था आज दोपहर। ओके, मार्केट वॉज इन ओके, ये भी सेम है, ये भी बाई की तरफ जाना चाहिए। बाय लुकिंग एट 5 मिनट टाइम फ्रेम, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सिंपल सा प्राइस एक्शन है, बट यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर द लॉन्ग, यू कैन डू दिस, वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, देन यू कैन एंटर द लॉन्ग। ओके, BTC पर, so you can enter BTC from this area, this height. Your SL will be below this trail line, your entry, and your target will be here. Okay, got it? Hi brother Shabani, hello brother Sandeep. So ये है हमारा 30 मिनट का, ये था थीमो रिट्रेस का 100% ऑफ रिटर्न बैक। So I will remove this all now. Okay, if you want to enter in a trade, you can see this analysis, you can see the structure, you can enter in a trade, right? ओके, ये अभी तक गया नहीं, ब्रेकआउट कर रहा है, तो भाई माइंड गेट अप। फिर लेट्स गो टू द गोल्ड अगेन। गोल्ड पे जैसे मैंने बताया भाई, ये वाला ब्रेक करने दो, तभी हम लोग बाय की तरफ जाएंगे। ओके, वी विल गो फॉर द बाय इफ इट ब्रेक दिस एरिया, अदरवाइज वी माइट गेट अ सेल मूव फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिले तभी हम लोग बाय की तरफ जाएंगे, नहीं तो भाई इसको फॉलो करता है तो भाई सेल की तरफ मार्केट जाएगा। तो बेटर बी रेडी, बी रेडी। इसके अंदर हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मार्केट को लग रहा है यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा सकता है, वेट करना, ठीक है? क्योंकि एक तो टारगेट हम लोग को यहाँ से ट्रेड करने के मिल रहा है, 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, सो बी पेशेंस। इसके अंदर इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क मी। आपके पास कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ से कहाँ से हम लोग ट्रेड करें, तो वी माइट टेल यू। ऊपर की तरफ तो जाना चाहिए। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इट्स इन द इथेरियम आल्सो जस्ट द सेम वे, हम भी देखे हैं। इथेरियम दैट इज यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी। ओके, ब्रेकआउट कर रहा है। इफ इट डू अ ब्रेकआउट भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। इफ इट कैंडल क्लोज तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? इफ इट कैंडल क्लोज, नहीं तो भाई यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने का भी अभी भी चांसेस है। वेट करके ट्रेड करो।
अभी भी यहाँ से नहीं, आई मीन ये वाला एरिया से, ये वाला एरिया से। यहाँ से ट्रेड करे यहाँ से, तब रखना पड़ेगा ये से। ओके, क्या टाइम मिलेगा हम लोग को? नया ट्रेड कितना पिप्स मिला था हम लोग को? 200 पिप्स तक आया था, उसके बाद गिर गया। ये है DXY। DXY तो रेजिस्टेंस की पोजीशन पे है, यहाँ से नीचे जाता है तो भाई मार्केट जाएगा ऊपर। सो बी रेडी। So if it break this DXY, then it will go upside, then only gold will fall. Otherwise, if it break down, gold will go upside. So this is the DXY, it goes opposite to the gold. Okay. If we can see today, market has made a huge big gap. So इतना बड़ा gap है market पे. And today's market open has made a so big of candle close. It's more than 280 pips. Okay, more than 280 pips of market fall. So obviously it's a big things in GBP, JPY. In odd also it happened. Every currency has fall so big, so big. Okay, it's like 45 pips. ये तो पूरा साइडवेज मार्केट चल रहा है। Usually Monday is very, you can say, market goes sideways mostly. USD ऐसे करके यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट जाएगा ऊपर। USD, okay, so this is the USD. Take a long from this area, keep it ratio small. Target, it's up to you. So you can put a 1:1 or like a 1:2 something, or 1:2. This is the 5:2. Why I'm telling you from here, you can see here is the order block. If order block breaks, then only market fall. You can book your ASL. Okay, small ASL will be, then you can enter in a trade. Okay, it just touch and came. Okay, gold break 44. Gold break 44. Yeah, it came. So that means it just only did a sweep. Okay, it just did a sweep. So nothing else. But slowly it need to go upside now. What is your opinion, guys? आप लोग का क्या ओपिनियन है गोल्ड पे? What's your point of view, guys? हाँ? What's your view on gold?
Okay, so Sandeep says it's a down. Anyone else? Okay, it will come down, then go for a long. Okay, that same thing. Even I also feel actually it need to go downside. But the thing is, we have to see if it candle break this area, then market will touch this area, then it might fall. Okay, so we should be ready for any one side. One is from this 15-bit order block. This is the valid order block. Okay, valid 15-bit order block. Why? That is a fair value gap. That means imbalance candle. Then we can see market hasn't touched this area, this order block. So that means it's a valid order block. Okay. Let's see. If it break, you can get a 3045 from 3045 or 3046. You can go for the long from that to 52. That means easily you will get a 60 pips of TP. Huh? तो किसी एक साइड तो हम लोग ट्रेड लेना पड़ेगा. कौन सी साइड जाए, सेल की साइड जाए या बाई की साइड जाए? Tell me guys. 67% of people you are guys saying market will go down. Okay. Okay, let's see. If you say it's a down, let me know the reason. And if you say it's a up, let me know the reason. I'm just waiting for this zone to break. I just want this zone to break. Give me a minute. Okay. Okay. Hello, Emo Kuwait. Okay. Hello, brother. Okay, so you have to wait. Yeah, something we can wait, brother. हम लोग वेट करेंगे मार्केट को देखने के लिए.
Okay, if it touch a 3048, it will go for buy with close SL 3048. So if it touch a 3048, so point of view 3048, कहाँ पर है brother? 3948. So what type of order block are you seeing, brother? 3048 is here, bro. Okay, so if you say if it touch 3048, then it will go by. Yeah, cause if it break this area, high probability of chance market to go upside. Cause this is the low. I mean high. So already market touch. So obviously it will go upside only. Market has the potential to go upside. यहाँ पर भी देखोगे तो भाई मार्केट पे बाई जाने का चांसेस है और भी. If you tap here also it will go upside only. Let's see क्या होता है. Otherwise, we have to wait patiently and see this area. If we tap, then we can go for the long. Right now, market is very sideways. No use of taking trade. Okay, no use of taking trade. यहाँ से देखते हैं. Okay, see the OB before market opens. So we can see OB before market opens. Actually, from where market did open, market has opened from this area, like this area, which is 37. Okay, if it break this, no chances of staying in the long market will fall then up to here. Okay, okay. Where is your prime partner? He isn't here today, bro. He has other work to do, so he's gone for today. Okay. मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा बाय लेना सही रहेगा. यहाँ से एक छोटा सा बाय 30 pips का एसएल एंड 38 to 40 1:1 46 मतलब 1:2 ऐसा मिलने के चांसेस है. जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका ऑपोजिट हो रहा है.
I'm just telling you, brother, don't enter. It's full of boring, brother. Mr. Cool. Boring market, don't enter. Okay? Don't enter. Just come out, okay? If you take any trade now. Full of, if you see, you can see confirmation market will go upside. Even though there is a little bit of complicated, whatever you're making a plan, nowadays, market is making full of trap. So if I enter for a long from this area and my expectation is up to here, I don't know I will get profit or what. First, there is a possible if it break this zone, you will find out 50 pips of downfall. Okay. So if you calculate from 35 or like from this area 36, 37, you can see 50 pips of downfall. So that is the reason I'm not telling you to enter in a buy or not a sell. Full of slow market and just leave it. Try to take a trade for a New York season. Okay, New York season पे trade करो. Right now, full even whatever I am making a decision, it's going always. If I take any trade, I know I will make it a profit, but what will happen is I have to hold for a long time. That is the thing. If I can hold up to this area, that means we might get a profit up to here. So like 1:1, I will get it. Okay. So and I don't want actually from that. If I take a trade from here, 35 to okay, this is the 100 pips, 45. But my SL will be 30. That means nearly 50 pips of SL, 100 pips of TP. I can get it. But this thing is, it's not obeying this retrace area and the trail line, nothing is obeying. So don't enter. Except that, just draw this, try to take a trade from this order block, 15-bit order block. Okay, so that will be a 15-bit order block. You can take a try from there. Or if market comes here 3030, I'll put a $1 SL and I will try taking a buy side. Every retrace area, try taking a trade. If you find it out, go with a very small SL. I can see here is a small pullback. So I can get with a SL of $1 or $2 and my target will be like $4 something. नहीं तो यहाँ से target करें 31 से 29 SL. Go for the 36 TP. So you can try like that. First, there is no proper zone. If you enter, you might get a profit. Otherwise, it will be a trap. Okay. अभी के लिए तो भाई मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए. Every position you will find out order block. Fair value gap is there. I'll try to enter from this area. And already trail line has back downside. तो थोड़ी बहुत मार्केट को पुल बैक कर रहे हैं कि नहीं देखना पड़ेगा. It will take a time लो. यहाँ तक वेट करना पड़ेगा मार्केट को. Then after if it respect, then market fall up to here. Otherwise, slowly it will go upside. Okay. So small OB is here, and one more OB is here. So complicated market nowadays. Okay. It will go upside for the pullback. Let's see. क्या पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं? ऐसे मत करो ब्रदर, क्योंकि समटाइम्स हमको देखना चाहिए कैंडल ओपनिंग हो रहा है क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं. तो अभी इफ यू पुट अ पेंडिंग ऑर्डर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मान लो थोड़ी स्पाइक मारा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ऐसा मत करो. आप कर सकते हो कि देखो, आपको वॉच करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा ब्रदर. आप वॉच करो, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो भाई ऊपर की तरफ जाएगा. नहीं तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ पुल बैक ही जा रहा है मार्केट. मार्केट को थोड़ी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, पुल बैक के लिए रिट्रेस करना चाहिए ऊपर की तरफ. बट पूरा स्लो है आजकल मार्केट. जैसे गोल्ड भी देख रहे हो भाई, पूरा स्लो चल रहा है. अभी सेल पे जाएगा मार्केट. 20 पिप्स तुमको मिलेगा
33 है, 31 तक आएगा, 30 आएगा। क्योंकि ये वाला ट्रेड ब्रेक कर दिया एंड इट ब्रेक द रिट्रेस एरिया। बीटीसी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला ट्रेड लाइन को रिट्रेस करने के लिए ऐसे करके ऐसे मिल सकते हैं नीचे की तरफ। अभी के लिए तो देख रहा हूँ भाई। ओके, मूवमेंट तो भाई नहीं है भाई, मार्केट में मूवमेंट नहीं है अभी। ये देखो, जितना मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है उतना स्लो भाई। मार्केट पे देखो, वॉल्यूम देखो, क्या वॉल्यूम है इस पे। जितना ऊपर की तरफ पुश किया था उतना ही मार्केट पे नीचे गिरा है। वॉल्यूम नहीं है मार्केट पे ना। ओके, 12:30 तक तो बाई करेंगे क्या? 12:30 तक नहीं ब्रदर, 30 से बाई हम लोग देखना पड़ेगा ब्रदर, कैंडल पे देखना पड़ेगा। सेलिंग पे तो गिर रहा है तो ऑब्वियसली वेट करो, और 1 मिनट वेट करो। वेट फॉर अ मिनट, और 1 मिनट वेट करो, ठीक है। 45 सेकेंड्स। इसके नीचे भी कैंडल क्लोज कर दिया तो भाई तभी मार्केट और भी नीचे गिरेगा, कंटिन्यू फ्लो पे मार्केट जाएगा, ठीक है। रुक जाओ। रुक जाओ। वो एक कंटिन्यूस कैंडल पे डोंट डू बाय, लेट इट फॉल। ओके, 3 2 1। ओके, तो छोटा सा मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। लग रहा है कि 20 पिप्स लेना चाहता हूँ, बोल रहा था भाई उसके नीचे ही जा रहा है। देखना चाहता हूँ भाई, छोटा सा एक रिस्क मैं लेना चाहता हूँ जो। नहीं, रिस्क लेना चाहता था लेकिन नहीं लूंगा। सेल पे जाएगा अभी कैंडल, ब्रेकआउट कर दिया ना। ओके, अभी कौन सेल की तरफ रिस्क लेना चाहता है? हु वांट टू गो फॉर दिस सेल? 29 to 32। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कौन सी सही डायरेक्शन पे ट्रेड करूँ भाई। ये पूरा ट्रैप बना रहा है, इसीलिए तो भाई आई एम ऑल्सो नॉट इंटरिंग इन अ ट्रेड। ना फॉलो करे ट्रेन लाइन, ना फॉलो करे रिट्रेस एरिया, पुल बैक्स, कुछ तो काम नहीं कर रहा है अभी। बेकार चल रहा है। आई जस्ट एक्सपेक्टेड टू गो फॉर द सेल साइड। ओके, 32 पर मैं एसएल रखूंगा, 32.500। जो शॉर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई उसके ऊपर डिफरेंस चल रहा है ऐसे।
ये वाला ए, ओके 32 500 should I enter? इस क्या बोलते हैं, should I enter? Should I enter for the sell side? अभी तो लग कुछ यूज करूँ। कौन सा ट्रेड? गोल्ड पे बाय की सेल की तरफ जाऊँ? बताओ गाइस, सोच रहा हूँ तो ट्रेड पे जाओ भाई, सोच रहा हूँ। नहीं तो भाई वेट करना पड़ेगा फिर से। Okay, I am expected to go for the sell here. ओके, मैं सेल पे जाना चाहता हूँ। গোপাল, তোমার পিসিতে ওই ফরেক্সটা
ओके, मैं छोटा सा एक स्कैल्प करना चाहता हूँ सेल की तरफ। ओके, तो आई एम गोना एंटर इन अ सेल। ये सेल मैं इसके ऊपर रखूंगा, थोड़ी बहुत बड़ा हो गया अभी, 50 पिप्स हो गया ये सेल। इतना सोच के देखा मैंने। टीपी रखूंगा मैं यहाँ पर, छोटा सा स्कैल्प करना चाहता हूँ मैं। और भी गिरना चाहिए तो 32 से मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। 18 आएगा क्या? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, ले लूँ क्या? ओके, गोल्ड टीवी ब्रदर, इफ यू आर एंटरिंग इन अ ट्रेड, इफ यू आर फॉलोइंग मी, लॉट साइज कम कर दो। क्यों बता रहा हूँ मैं? ये वाला जोन को मैंने टारगेट करके एसएल रखा हूँ, ठीक है? तो इफ यू एंटर इन अ ट्रेड, एंटर विद वेरी लो रिस्क, क्योंकि मैं और एक ट्रेड यहाँ से लूंगा मैं। ओके, ऐसे लूंगा मैं, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो यहाँ से मैं और एक ट्रेड लूंगा, पूरा टारगेट रखूंगा 20 से 30 पीस से, मैंने मार्केट को ऐसे एसएल रख दूंगा, ठीक है? तो इफ यू आर एंटरिंग इन अ ट्रेड, एंटर होती है प्रॉपर कैपिटल, लो रिस्क पे एंटर करो, क्योंकि आई डोंट वांट कि भाई तुम बोलो कि भाई लॉस हो रहा है। ज़्यादा लॉट साइज मत यूज करो, 20 पिप्स आ जाए, मार्केट को कॉस्ट टू कॉस्ट रखने के लिए ट्राई करो। फूलो फ्लैक्चुएट हो रहा है एंड इट्स मूविंग फास्ट। आया था भाई, 20 पिप्स आ गया था, ऑलमोस्ट 15 पिप्स तो आ गया था। देखते हैं भाई। ओके, यूरो यूएसडी उससे पहले चला गया ब्रो। वेट करो ब्रदर, और एक कैंडल के लिए वेट करो। इफ इट फॉर्म ब्रेक दिस हाई, गो फॉर द बाई। ब्रेक दिस हाई, गो फॉर द बाई। ओके, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है, ठीक है? तो इफ यू आर एंटरिंग, तो भाई मान लो कि भाई थोड़ी बहुत लो रिस्क पे एंटर करो, क्योंकि ऊपर की तरफ चलता है तो भाई और एक ट्रेड मैं एंटर करूंगा, एंड एसएल इसके ऊपर रखूंगा भाई। ये वाला जो जोन है, ये वाला जो पुल बैक है, इसके ऊपर मैं एसएल रखूंगा। एंड अभी से मैंने लो रिस्क पे लिया हूँ, तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा उस पर, ठीक है?
ओके, गोल्ड स्टिल अप ट्रेंड है ना। गोल्ड तो अप ट्रेंड है, हम लोग तो सिर्फ पुल बैक पे ट्रेड कर रहे हैं ब्रदर। गोल्ड अप ट्रेंड है बट वी आर टेकिंग अ पुल बैक ट्रेड, ये वाला। 20 पिप्स तो भाई तुमको मिल जाएगा इजीली, 20-30 पिप्स। क्योंकि भाई आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए जस्ट मेंशन किया हूँ ये वाला। एंड ये वाला क्यों मैं सेल बताया, यू कैन नो दैट। ओके, यू कैन सी दिस, वाओ। ओके, if you calculate from here 30 pips, if you calculate from here 180 pips, तो मतलब almost 20 pips। Okay, more than 20 pips we are getting it। Okay, so सेल पे जाएगा, ठीक है। होल्ड करके रहो। तो if you want to hold your trade, you can hold your selling trade. Market obviously need to go sell side। Huge, भाई।
হাই ব্রাদার, হাউ আর ইউ? গ্রেট ব্রাদার, आप बताओ কেমন আছো, কেমন চলছে, কেমন চলছে ব্রাদার? Whatever it is. भाई साहब, कैसे हो ब्रदर, आप कैसे हो? भाई मार्केट करना क्या चाहता है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जा। हो गए। ওকে, গোল্ড 3100 প্রফিট করছি 3100 থেকে। ভাই সাহেব তাহলে তো ব্যাপক ব্রাদার। হ্যাঁ, 3100 মানে কোথায়, এইখান থেকে। এবার বুক করাটা উচিত, কেননা মার্কেট পুরো সাইডওয়েজে চলছে, আপ ডাউন করছে। ওকে, তো এর থেকে আচ্ছা বুক করে नाও। मार्केट पूरा से चल रहा है साइड वेज पे, 20-30 पिप्स आया, उसके बाद मार्केट ने किया अपसाइड मूव विदाउट रीजन। ओके ओके। अरे यार क्या हो रहा है? बीटीसी 67 के जावे, देखता হবে ब्रदर, देख रहा हूँ मैं भी 67 के। यार तो साइडवेज হয়ে গেছে, ফুল মার্কেট साइडवेज पे চলছে, वन डे पे चले जाते हैं। कोई भी मार्केट पूरा स्लो चल रहा है, 67 आई वुड से 72 तो भाई चला जाएगा, 73 72। ठीक है, ये वाला तक तो मार्केट जाएगा। और ये मैंने तुम लोग को लास्ट 2-3 महीने से बता रहा हूँ कि भाई मार्केट आएगा यहाँ तक। ओके, ये वाला ब्रेक किया तभी जाएगा ब्रदर 67 के। तो 67 क्या ब्रदर, 53 तक चला जाएगा। और भी सेल गिरेगा बीटीसी, और भी सेल गिरेगा। गोल्ड पे क्या हो गया भाई, मेरा तो लॉस हो गया। तो जाएगा। না ভাই, আবার মাথা তুলে আবার আমাকে
मार्केट में তবে এখানে কিন্তু ডবল লক করবে ओके, यूनिवर्सिटी व्यू क्या है भाई जी आपका? क्या मैं सेलिंग पे जा सकता हूँ यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी पे आप देखो, अभी सेलिंग पे जाओगे तो भाई यहाँ से तुम बाई करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, तुमको 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। यहाँ से जो जो सप्लाई आई मीन डिमांड है, लिक्विडिटी जो है, इसके बाद देखो मार्केट बहुत अच्छा मूव किया है। तो जब मार्केट यहाँ पर जो जो बायर्स है वो लोग भी यहाँ से फिर से पुश करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ। यहाँ पर मार्केट पूरा अनसर्टेन है, सो हाउ के लिए आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ से सेल जाएगा या बाय की तरफ जाएगा। अब सेल पे जाना चाहते हो तो भाई आपका एसएल कहाँ पर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये माइट हिट योर एसएल। तो इसीलिए मैं अभी ट्रेड लेने के लिए मत बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ से ट्रेड करो जिस ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हो, 5 मिनट पे एक ड्रॉ कर लो ऑर्डर ब्लॉक, वहां से तुम ड्रॉ ट्रेड लो। गॉट इट? नहीं तो यहाँ पर ट्रेड लोगे तो मैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा बीचो पोजिशन पे है। बट यहाँ से तुम सेल कर, आई मीन यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट आएगा, आपका एसएल रखने पे प्रॉब्लम हो जाएगा, इट माइट हीट योर एसएल, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आएगा। तो वेट करो, पेशेंस रखो, जब मार्केट टैप करेगा यहाँ पर, यहाँ से बाय करो। एंड बीटीसी जो बोल रहे हो, बीटीसी क्या करे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तुमको क्या लग रहा है? लेट्स गो टू दी 4 आवर्स। ओके, 4 आवर्स पे क्या है, यहाँ पर तो ज्यादा कुछ पुल बैक भी नहीं है, बट वी कैन सी एक हाई जो भी है यहाँ पर है। तो ऑल हिट मैंने क्लिक कर दिया, तो आई कैन सी भाई मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए ब्लू कलर लाइन। ओके, एंड 5 मिनट पे चलते हैं, आई मीन नहीं 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पर मार्केट पूरा स्लो हो चुका है, देखो 1 2 3 4 हो चुका है, मार्केट इसके अंदर ही घूमा है। लास्ट 4 घंटे के बाद मार्केट इज इनसाइड दिस, तो प्रॉपरली वी कैन टेक अ ट्रेड। ठीक है, 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे भी सेम है, देखो यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, तीनों कैंडल पे कोई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर एक जितना वॉल्यूम आया था उतना गिरा दिया मार्केट पे, ऐसे ही अप डाउन कर रहा है। थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जाने दो, मार्केट को पुल बैक करने दो। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन, यहाँ से हम लोग को एक सेल मिल सकता है, नहीं तो ये वाला ब्रेकआउट कर दिया तो भाई और भी ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, रुक जाओ, विल टेल यू। इसके ऊपर 77.50 के ऊपर कैंडल ओपन होता है तो भाई गो फॉर दी बाई। नीरज चौधरी, 77.50 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, आई मीन ओपन होता है तो गो फॉर दी बाई। अदरवाइज यहाँ से एक सेल हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, गॉट इट ब्रदर, ऐसे ही होगा। तो गोल पे क्या व्यू है गाइस आप लोग का? भाई 61% ऑफ पीपल यू गाइस आर सेइंग इट विल गो फॉर द डाउन। लेट्स सी, लेट्स गो भाई, मैं भी सेल पे हूँ। ठीक है, सेल पे जो जो जाना चाहते हो भाई सेल की तरफ जाओ, क्योंकि भाई मार्केट ने रिट्रेस किया है, इसके चक्कर पे तुम लोग सेल की तरफ जा सकते हो। कोई भी एंटर नहीं किया तो अभी भी एंटर कर सकते हो, मेरा तो भाई एंटर है यहाँ से, छोटा सा रिस्क लेकर तुम भी एंटर करो। ओके भाई, मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा है मैंने बुक तो अभी तक किया नहीं। आ,
ओके ओके, प्रॉफिट पे हूँ गाइस। ओके मेरा ट्रेड चल रहा है, यहाँ से मेरा ट्रेड चल रहा है गाइस 3000। ओके यहाँ से मेरा ट्रेड चल रहा है यहाँ से। तो ओवरऑल आई मेरा प्रॉफिट। ठीक है, कौन कौन ट्रेड पे हो गोल्ड सेल पे लेट मी नो। कौन कौन सेल लिया है, इज एनीवन टेकन अ सेल और बाय। बी सेल, ओके ओके, सो दोनों बीटीसी। ओके आप सेल पे हो। ठीक है लो रिस्क पे ट्रेड करो, ठीक है लो रिस्क पे ट्रेड करो, मेरा भी सेल चल रहा है। एंड ये सेल मैंने फिक्स करके रखा हूँ 32.50 समथिंग रखा हूँ। ठीक है, एक मेरा तो प्रॉफिट पे चल रहा हूँ मैं अभी भी, क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ से है 29 से, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था यहाँ से। ठीक है, आफ्टर द कैंडल क्लोज आई टू का ट्रेड एंड अभी मेरा प्रॉफिट पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि भाई 29 से देख सकता है 26 मतलब 30 पिप्स में मेरा चल रहा है प्रॉफिट। स्टिल आई मेरा 30 पिप्स ऑफ प्रॉफिट, देखते हैं भाई एट ब्रेक इवन। ओके ब्रो, नहीं मैंने 29 से लिया ट्रेड अभी, प्रॉफिट पे हूँ अभी। एसिड हीट हो जाए तो भाई गंदा कट जाएगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट पे हूँ। हिट मत हो बस। ओके पीछे की तरफ आ रहा है, ये चक्कर दे रहा है भाई। तो भाई भाई मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना रहे भाई, डरा रहे हम लोग को। एक ही कैंडल भाई इतना बड़ा बड़ा बना रहे भाई, 30 पर चला गया 27 पर आ गया फिर से। मतलब करना क्या चाहते मार्केट, देखो one candle itself given us how many pips, 30 pips। फिर से ये वाला कैंडल देखोगे तो 1 मिनट का कैंडल 320 पिप्स, टोटली साइड में जस्ट अप एंड डाउन। या ब्रो बेकार है भाई, बच के रहो। ओके बड़े गैप मिला है कैंडल ओंडा पे। यार लग रहा है भाई प्रॉफिट बुक करके बाहर आना पड़ेगा। ओके ओके, बाहर आ जाओ क्या, नहीं बाहर नहीं आता।
टेरा 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 टेरा, या लेट्स गो। ओके 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 भाई, मेरे को $1000 मिल जाए, बाहर आ जाऊंगा भाई, एक ट्रेड तो कट कर दूंगा। ओहो, फिर ट्राई कर लो, करो ब्रदर करो, कौन मना किया। एक तो भाई इसको तो भाई भाई $1000 के ऊपर चल रहा है भाई मेरा। ले भाई, एक तो भाई मैं क्लोज करूंगा, एक तो भाई मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ओके 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 भाई, और नाइस, ठीक है, यहाँ से चल रहा है भाई, यहाँ से। रीएंट्री कहाँ से करूँ भाई, कहाँ से करूँ बोलो भाई, 1 मिनट का कैंडल दे रहा है इतना बड़ा। ले भाई, 400 पिप्स का। ओके आई जस्ट डू दी ब्रेक इवन, अभी भाई ब्रेक इवन कर देती भाई। शुड आई बुक, गाइस लेट मी नो। टीवी तो भाई हीट हो जाएगा लग रहा है। ओके, और थोड़ा भाई, आ जा। ओके डन भाई, डन डन बुक, डेली करते रहो, मैं तो भाई चलता रहा। भाई कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, अरे मॉडिफाई हो जाए। ओके भाई, कितना पिप्स का टारगेट था, फिर भी बुक कर दूं, कर लेती भाई, मैंने लो रिस्क पे लिया था भाई, वो तो चलता रहा है भाई, चलने दो चलने दो, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग ही करते रहूंगा। मतलब क्या हो रहा है। हाँ, या ब्रदर बुक इट योर प्रॉफिट, बुक कर लो। कौन मना कर रहा है भाई। ओके भाई, क्लोज हो जाए तो भाई $2000 का क्लोज हो जाएगा, ज्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। दिन में भाई एक ट्रेड लो ऐसे, मजे करो। मैं तो भाई भूल ही गया था। ओके भाई, हिट मत हो जा, नीचे जा नीचे जा, ट्रेलिंग एसल हिट मत हो। ओके, I'll be booking for 3018 to buy, not no, first digest that trade. Okay, so there is no 100% accuracy, we will get a buy from here. Okay, I'm just telling you to take a book it due to the support here. Yeah, you can go for the I won't go for the buy because I can see some order block is below here, so I've been waiting for this. If it hit my trailing SL, then I will go for the long. And मेरे को लग रहा है भाई हिट होने दो, then I will go for the long. Okay, I will go for the long next candle, not now. तो you guys made a profit, हम तो भाई बनाए। चेक, ये था मेरा एमडी प्लेयर, मैंने लिया था ट्रेड हिस्ट्री, कहाँ पर गई भाई।
टुडे लास्ट वीक। ओके टुडे। तो 2000 का आ गया भाई। कहाँ से ट्रेड था मेरा? 29 से एक था, 26 से एक था। मैंने बताया ना 29 से मैंने एक लिया हूँ। एंड ये भी ट्रेडिंग एसएल पे हिट हुआ है। सो ऑरेंज कलर बाकी टच हुआ है। ओके बाकी तो भाई चल रहा है भाई। इस अकाउंट में ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर भी चलता है भाई। तो और क्या भाई, दिन में हो गया लास्ट वीक का। क्या करो भाई। ठीक है, लाइफ पे ले लिया, लाइफ पे प्रॉफिट किया। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अरे बुक करने के बाद और भी गिर रहा है। वो तो मेरा ट्रेलिंग एसिडिट हो गया ना। होल्ड किया तो और भी गिरेगा। यहाँ तक आना चाहिए मार्केट का एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। स्टिल वी हैव अ डाउनफॉल। स्टिल वी हैव अ डाउनफॉल अप टू हियर। 242989। ओके वी हैव अ डाउनफॉल अप टू लाइक हियर। देखो भाई, तो जो जो बुक किया है भाई उसका तो भाई सही है। जो जो नहीं किया तो भाई देख लो। ओके ओके। वन इस टू टू का ट्रेड था, उसके ऊपर भी। ओके और भी नीचे जाएगा गाइस, इफ यू आस्क मी। ये लो तक तो भाई इजीली आ जाएगा, ये वाला लो तक। You will get a still 20 pips of downfall. Then after my highest target will be 2990। वहां तक तो भाई मार्केट आएगा, वहां से मार्केट जाने के चांसेस है ऊपर। Until that we will have a sell market। तो वी मेरा प्रॉफिट वन प्रॉफिट अभी के लिए भाई। इसको रिमूव कर देते क्या ये वाला 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक का? नहीं, तो यू विल माइट गेट अ कंफ्यूजन। वो 15 मिनट। ओके ओके। ये वाला भी ब्रेक हो जाए तो भाई और भी नीचे आएगा, जैसा भाई आई एम टेलिंग यू। तब फिर से तुम लोग एंटर कर सकते हैं, जो जो एंटर नहीं किया। आई मीन आप लोग एंटर नहीं किया तो भाई फिर से तुम लोग एंटर कर सकते हो। अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी भी।
Wait a minute, guys. Zero. Okay. Okay. ये भाई बाई है अभी। अभी तो भाई मैं बाई की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बाई की तरफ जाऊँ तो भाई एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ से तुम लोग को बताया था, क्योंकि भाई रिट्रेस था, पुल बैक था, देखो परफेक्ट था लाइन। सो यू हैड अ स्मॉल एसएल, इसीलिए मैंने यहाँ से तुम लोग को बोला सेल की तरफ जाओ, टारगेट तुमको मिल जाएगा। पहले वो भी 100 पिप्स के ऊपर टारगेट मिला है हमारा। बट यस आई कांट से यू गो फॉर द बाई ड्यू टू
market has the downfall. Okay, market is downtrend. If I say go for the buy, that means we are going against the trend. अगेंस्ट द ट्रेड पे हम लोग जब ट्रेड करेंगे भाई, ट्रेड करेंगे, हमार एसएल विल बी बिग एंड टीपी विल बी स्मॉल, और रिस्क है 50-50 प्रॉफिट बनाने का। तो इसीलिए आई एम जस्ट इग्नोरिंग भाई, अभी बाई की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ ब्रदर, क्योंकि रिस्क ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिस्क है ट्रेड पे। इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर देते हैं। तो कोई भी बाय की तरफ जाना चाहते हो तो भाई यहाँ पर बहुत ही रिस्की है। बाय अभी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो इफ यू आर गोइंग फॉर द बाय, बाय विल पुट अ एसएल, क्योंकि भाई लो है यहाँ पर। सो यू कैन सी दिस, आपका बड़ा एसएल हो जाएगा और टारगेट कहाँ तक मिलेगा तुमको, यहाँ तक मिलेगा। तो 30 पिप्स के लिए आपका एसएल हो जाएगा 100 पिप्स। इसीलिए जस्ट इग्नोर द बाय नाउ, फिर से कोई एक जोन आने दो, मार्किंग करो जोन पे, उस जोन पे ट्रेड करो। हड़बड़ी पे ट्रेड करेंगे तो भाई we all know that market is in a sideways and making money is very hard। मैं तो बोल सकता हूँ कि भाई बाई की तरफ जाओ, 29 तक तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट एसएल कहाँ पर रखोगे ये सोचो पहले। यहाँ पर तुम्हारा एसएल हिट हो जाए तो मैं, छोटा सा एसएल था, टारगेट बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। इफ यू टेक अ बाय नाउ, इट्स हार्ड टू पुट अ एसएल। ठीक है, तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई इसके नीचे एसएल, इट विल हिट यू इजीली, पर हाँ 29 इजीली तुम्हारा हिट हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बाय की तरफ प्रॉफिट मिलेगा, but you can make it a profit, I would say। इसी में फटा ऊपर भाई, अभी तक तो भाई उस पे ही है मार्केट। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ मिला कि ज्यादा कुछ नहीं मिला। टाइम फ्रेम 30 मिनट। इफ यू वांट टू गो फॉर द बाय, लेट इट ब्रेक दिस, गो फॉर द बाय। अभी ट्रेड मत करो। ठीक है, यूएसटी पे और भी थोड़ा ऊपर की तरह कंफर्मेशन कर लेना, उसके बाद बाय की तरफ जाओ। बाय जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट आपका कंफर्मेशन के लिए और भी ऊपर जाएगा ये यूएसटी जेपीओ।
यूएसटी जेपी लॉन्ग है, मिनिमम तो तुमको ये वाला मिलेगा, ये वाला ब्रेकआउट कर ले तो उसके बाद और भी ऊपर जाएगा यूएसटी जेपी में। तो चीज़ है कि भाई तुमको ये सब रखना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा इस पोजिशन पे। ठीक है, मार्केट बुलिश है, बाय की तरफ जाएगा, बट you can put a yes sir here. ओके, 12 बैग नीचे जाएगा, गोल्ड और भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, गोल्ड गया नीचे। सो ओके, दैट मीन्स नो वन इज इंटरेस्टेड इन डॉलर, डॉलर पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, डॉलर को वो लोग छोड़ दिया अभी, सिर्फ वो लोग फोकस ऑन गोल्ड। 29 बोला था, 31 चला गया। ओके, क्या बोला तुम लोग को भाई, ऊपर की तरफ जाएगा है, मैंने तुम लोग को यहाँ इस पोजीशन पे बोला था 26 27 पे बोला, मार्केट जाएगा 29, बट इट गॉट टू 32। तो मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, चीज़ है कि भाई हम लोग ऐसे नहीं रख पाएंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी फिर से एक पुल बैक कर ले दो ऐसे करके, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। इसके नीचे ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं, फिर से यहाँ से बाय करो, छोटा सा ऐसे रखो, ट्रेन लाइन के आई मीन ए वाला रिट्रेस के नीचे, टारगेट तुम्हारा ए वाला हिडन शोल्डर टाइप। ओके, ऐसे रख सकते हो, वो भी 1 मिनट पे देख लो। हाँ, मार्केट ने पुल बैक ऑलरेडी दे चुका है, कैंडल की ऊपर की तरफ जाने दो, उसके बाद एंटर करना। भाई 2 मिनट पे 100 पिप्स, 966, मतलब 2 मिनट पे। ओके, डोंट डू ब्रदर, नॉट नाउ लुकस, इफ यू डू, हाँ लो रिस्क, ओके लो रिस्क, मतलब ब्रो you can keep your SL at least 29 something, 20 से 30 pips SL, lot size very low, don't enter high, okay Lucas? ये थोड़ी रिस्क, दिस इज लिटिल बिट रिस्की, ओके। ओके, बाय सेल ब्रो, सोलो प्रोफेशनल ट्रेडर। Bro, if you asked me little bit before, I would have said, bro, ये वाला सेल। ब्रो निकल लेट आई थी ब्रो, कुछ जो लेट निकल।
BTC, please. BTC now no chance to say anything, brother. BTC, there was a zone. Okay. BTC. Did it form a candle upside? Go for the long. Or if it form a candle below this, go for the sell. 51, 50 seconds more. I think it will go for the sell to this area. Buy also charges there. I'll tell you, brother, I'll tell you. Bro, to take one trade, it takes a time, brother. We've been waiting for a long time, then checking it, then after telling you to enter in a trade, and like that. Same thing is happening here. I will tell you, and I'll tell you the reason. If I tell you to enter in a trade, I will tell you the reason. Otherwise, I can't see any proper reason to tell you to take a trade, but I can see it already break. So obviously, it need to go upside. If you ask me, if I go for the line, let me remove this. What you see here, this is the resistance. Okay, so it break the resistance. Market came to retrace here doing a time pass. So if it form a bullish candle one from here, then we can go for the long. Okay, we can go for the long up to this area. Okay, up to this height. Okay, and the thing is, I can see some pullback and inducement on here. So little bit of problem we might get. So we have to wait for bullish candle, or if we want to take a safe trade, then we have to wait for this breakout. Okay, one thing we can do, we can enter long if we break this high. Okay, let's try to go upside, let it be. We will go for the buy from here, and our SL will be this. Not now, just mark. Okay, mark in the zone, then you can take a trade. Right now, why I'm telling you not to take any trade? The 30-minute also, you can see that candles are in a sideways. Now let's go to the candle. Okay, you can see this is the pullback area. Actually, it need to go upside, but for your confirmation, okay, if you don't want to lose your money, I would say go for the long from here. I hope you understood this one. From here, it need to go upside like that. And you can keep your low ASL below this area. And if you break this, market might come up to this area, tap this area, then it can go upside. Whenever you enter in a trade, enter with very low risk, so that if it goes to your opposite direction, you will come out to the minimum loss. Okay. Okay. So it's not obeying now.
then no use of line. Okay, not obeying now. Yeah, I tell you, brother Nasir, I told you to wait. Okay, if you want to enter in a trade, you have to wait patiently. Reason you can see this market is like moving sideways unwanted. एक्चुअली मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, गोल्ड को भी, बीटीसी को भी. ओके, मार्केट में अभी वॉल्यूम कम हो चुका है भाई, न्यू सीजन आने दो. मार्केट है तो भाई बाय की तरफ जाना चाहिए, अभी भी प्रेशर तो है बाय का. there is a pressure if you ask me. ओके, ये वाला भी ब्रेकआउट कर दिया. इसको रिमूव काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं इस पर अभी. वेट ब्रो वेट, यहाँ पर मेरे को भी कुछ मार्केट का मूव समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई साइडवेज पे चल रहा है मार्केट पूरा. ओके, फीवर गोल्डन रिट्रेस पे ही है मार्केट. मतलब सेलिंग का चांसेस ज्यादा है. ओके, वी हैव अ chances for market to go sell side only. Will be few more retrace if you just see. Yeah, gold will come down, brother. Gold need to come down due to the FIBO retrace is there. Okay, gold need to come down. The recent height and the recent low, market tells us it's in a Fibonacci retrace area. So we can see market maximum can come up to this area, then after we're gonna get a retrace. Okay, so maximum we're gonna get our market to go 3037 something, then we might get a again a sell move up to here again. Okay, so overall it's a sell market, but already I took a trade, so I won't be taking many trade. If you guys have a doubt, try with a very low risk and just take a trade. Let's see guys, we can take it or what. तो ये बहुत तो रिस्की है ट्रेड पे.
Okay. Yeah, it will come down. It need to come down. It if it goes upside maximum, it need to go upside up to 37. Okay. Maximum we need to go 37. But उसके ऊपर चला जाए तो भाई we can't do anything, right? We can't do anything. Then close your eyes and go for the buy then. Okay. Okay. It's another deal in the VIP channel. Is there another deal? I don't have any deal, bro, and I don't know any idea of Telegram channel, Nazir, cause I the one who handle YouTube. So if you have anything regarding YouTube, like any trade, live trade, regarding any trading strategy, analysis, I can help you. But if you ask me the what is the price, how much it is, and how many signals, so it's depend on the Telegram member. So I'm different person, he different person. Okay, so we do handle different social media, and if you have to contact our Telegram brother Nazir. Okay, you have to contact our Telegram so that if any offer or any okay deal is going on, you might know through them. Contact our Telegram, they will tell you. I missed the live for 30 minutes. What's the update for gold? Sorry, bro, you missed the trade also then. Because actually, we took a trade in a gold and made a profit. Right now, I would say it's a gold sale again. If you have a capacity hold up to 37, you can hold it and you can go for the sale side. Or if you want to enter, let it close this 2-minute candle. Then you can go here and you can put your SL again. This area, I mean this. Okay, and target up to this. So short. Why I'm telling you, first try to understand, then enter in a trade, gold for the sell. Reason, there is nothing else we can find out here. If you draw only Fibonacci from this high to low, you can see I have marked already a box, that is the golden Fibo zone. From there, I've been telling you it's a sell market. If you have a capacity hold up to 37, and you can see market has already a high up to 35. So 10 to 15 pips extra pips. Okay. Then after you can go for the sell side. And we took this trade, brother. We took this trade. Right now, you can go for the sell, but the thing is, SL will be big. You in what time frame? I think just scroll and you will find out when I enter. Okay, like that was 43 45 minute. Okay, so 45 minute before, like 45 minute before, I just mentioned in our live. If you just scroll 45 minute 40 minute, you will find out. And I have told that I'm just entered from 29. And
If you miss that one, it's okay, fine. We're gonna try one more taking trade from like 30. So there is no possibilities to take any trade. But if you follow Fibonacci retrace zone, so this is your retrace from 35 is your 35 to 37 should be your SL, and you can go short up to 16 again. So up to this will be your target. SL will be this. So if I just draw from like here also, your target is here, SL is here. So that means you will get like 1:1. So 1:1 trade, not proper trade. And if it break, then only you will get a buy trade. Otherwise, market need to fall up to this area to 15 minute. We get a long from here. Okay, so the code is legit. Actually, we do handle account, that is true, and we do make, and you will find out many screenshot of the profit also. Okay, so if you say yes, it is legit, except that if you have any other doubt, you can ask me. I can help you. Okay, you ask me, we do account management or not? Yes, we do account management. Okay, we do that. Gold will go down. Okay. Okay, bro, brother, way check and do. Okay, sure, brother. The thing is, if you want to enter in a trade, you can enter from this 15-bit order block. Here below you'll find out. Or if you want to go for a buy, go 37 above. Right now you can enter in a sale, but the thing is your SL will be 37. Okay. Which pair is this? This is gold. Okay, this is the gold pair. We took the trade. And right now I can say it need to go downside due to the Fibo retrace. Fibo zone is here. If Fibo retrace is here, so the market need to go sell side. Okay, you can see this. Surely I will do that. I want to give my account for management as I am doing losses and I want to recover. Akash Swami, the thing is, brother, there will be losses from our side also. There will be profit from our side also. And the thing is, if you really like what you say, bro, it's really hard to explain. But we do manage, we make it profit, that is true. But sometimes we also make it losses. Okay. What is the gap close? Will the gap close? Okay, can I ask you about the oil? Let's check. Okay, gold sale hai. Okay, you can go for the sale side. Gold. Will it fill? I'll say. Okay, I will not this US oil. Let me check US oil. That will be the crude oil. Okay, this is your crude oil. Will it fill or what? Okay, let me see. We have a huge, bro, huge. Nearly 100 pips. So let me go to the long time frame to analyze that. I can see fully downfall, bro. I can see only downfall. No support. So there is no support, nothing is there. 4 hours. So market is trying to do a pullback. Okay. But it couldn't do that. 4 hours, so 1 hour, still it's a bearish. So if you ask me, I couldn't find out. Okay, if you just see this, what do I say? Market is between these two area. Okay, so from 59 to 61. Only market is going like 20 to 30 pips, or even call that okay, 59.60. Okay, 100 to 200 pips. That's it.
30 minute, bro. I don't want to say anything, brother, in this area before I make any decision. I want to look at this market. It's full of sideways. How can I decide and tell you will it go upside or downside? Okay. If it has anything like support or a block resistance, then I would can say there is nothing here. There is no order block here proper. Okay. There is no proper fair value gap is here. There is no proper candle. If you ask me, there is no volume in the candle. Look at this candle. So what can I say from this area? There is no volume in the candle. If I use any volume indicator also, let me check any volume is there in the market. Okay. So that is like average volume. You will find out that is only average volume. There is no big move. Okay. So I can see. Okay. You are with me, brother. That's okay, fine. Try to understand. Okay. I'm not sure, but if you ask me if you see any high, so I can see one high is here, right? So if it make a high break, okay, and do a retrace or pullback, then go for the buy. Okay. You can see this high, 1 2 3 high. If it break, do a retrace in 1 minute or 5 minutes, then go for the long. Otherwise, no trade zone, I would say. Obviously, I couldn't find out anything here to take a trade. Okay. So very soon I will close our stream. ओके वेरी सून हम लोग क्लोज करेंगे स्ट्रीम को, क्योंकि यहाँ पर तो भाई ऐसे कुछ भी नहीं है ना, अच्छा मूव मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो वी विल क्लोज आवर स्ट्रीम। भाई से स्लोली चलो। हाँ। ओके, अभी लग रहा है कि ऊपर की तरफ फिर से जाएगा रिट्रेस करने के लिए।
Okay, I took a sell from 225. Okay, you have taken a sell from 25 and TP is 20. Yeah, that will be fine. 20, or you can put a 17. But the thing is that it will go, then after it will do a retrace. If you have a capital to hold your trade, then please do. And this market is very sideways and complicated. Market need to go sell, but the thing is, ये जो 37 है, market can come up to here, right? I drew this, right? So it can come up to the Fibo retrace golden zone area, then after it can fall. So it can happen like that. Okay, so we will close our stream now. So those who have taken trade, please make sure you close it properly. Do break even or trailing SL. If you have taken 27, 25, if you have taken any trade, please do make sure do trailing SL, SLTP, because fewer retrace is there. That is the reason I told you to go for the sell side. If it break this 37, go for the long up to this supply area. I mean like this supply area. And if you want to go for the buy, go buy from 15 OB. Okay, so that is a two possible zone I have marked you. One is from here. I mean like one is from here, go for the sell up to here. Or if it break 37, go for the buy. Okay, so that is the trade you can do. Take it due to the more fluctuation. I don't want to take any trade now, and I would say the same thing. Okay, so thank you guys.
Okay, so from 25 to 21, even though so those who take a sale, I think Zevi, if you have taken a sale, I hope you can see this profit trade. So try to book it or do the trailing SL or break even. Okay, thank you guys. So at least we made a trade with this area, and I've given you this trade also. And I have given you this zone marking, like taking a trade buy for 37 up to this target up to 52, and taking a trade from 2989, and you can pick your asset below this area. Okay. So एक सेकंड आइए रुक जाओ ऑडियो डिस्प्ले कैप्चर ऑफ रखना चाहिए स्ट्रीम This is as the key I was reaching.
देख ले भाई, मैं क्रूज करके जा रहा हूँ भाई।